हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो टुडे आई विल शो यू। फर्स्ट क्रिएट सैंपल प्रोजेक्ट। फर्स्ट गो टू फाइल, न्यू, जावा प्रोजेक्ट एंड राइट हियर लाइक यू कैन ऐड एनीथिंग नेम। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ स्ट्रिंग जावा करके प्रोजेक्ट का नाम। इफ यू वांट टू चेंज जेडीके वर्जन सो यू कैन चेंज ऑल्सो। देन गो टू नेक्स्ट, देन फिनिश। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारा project create successfully. If you want to create a package, so right click new package. So you can write here com.smart java and then finish. So you can see here package create successfully. So right click new class, for example demo. तो मैंने यहाँ पे डेमो करके क्लास क्रिएट किया। तो यू कैन सी हियर क्रिएट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम मेन मेथड राइट करते। यू कैन सी हियर पब्लिक static void main string arguments like this. okay so यहाँ पे मैं string write करती हूँ like str, okay, in double quote like welcome to smart java, okay, and use semicolon. String क्या होता है? You can write anything in double quote like this is called as string. for example मैंने again एक string write की like string str1, okay. So you can write here like w r, you can write digit also, any symbol like for example numbering 1 2 3 4. So you can add anything in double quote like this is called as string. अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? like you can use here sysout and pass this str in print, okay. right click run as java. So you can see यहाँ पे हमारा प्रिंट सक्सेसफुली, ओके। सेम एज हमें इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है str1 को। तो यू कैन str1 कॉपी एंड पेस्ट हियर, सेव एंड रन एज जावा। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारी अगेन अनदर स्ट्रिंग एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो मैं आपको स्ट्रिंग को और कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, अनदर टाइप कैसे डिक्लेयर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग str3 करके राइट किया। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड प्रिंट करती हूँ लाइक वेलकम इन, like you filling the blank, and use semicolon. If you want to print these things you can print also. Copy this code and paste here, copy this str3 and paste here. If you want to execute so you can execute run as java. So you can see here print successfully. अगर हमें उस फिलिंग द ब्लैंक को भरना है तो कैसे भरेंगे? So you can see here string str4 like you can use double quote smart java, okay, new semicolon, same as string str5, okay, classes, you can use double quote, okay, and use semicolon, okay. तो हम इस str4 और str5 को str3 में कैसे ऐड करेंगे? तो यू कैन सी हियर लाइक string str6. so copy this code and paste here. You can use double quote here. You can add concat this str4, copy and paste here, and then program is double quote, okay, and then next is concat the str5, copy this one and paste here, okay. Save this, and if you want to print this statement so you can print also like str6.
Save this and print. Run as Java. So you can see here हमारा print successfully. Welcome in Smart Java program classes. If you want to add spaces, so you can add also like this. Okay, and save it and run again. Run as Java. So you can see here print successfully. इस तरह से हम स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन जावा. If you have any question regarding this, how to execute string another pattern, please write comment in comment section. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you.